Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine and enjoying your summer vacation. Today we are going to discuss about present indefinite tense. This lecture will be very beneficial for all the students belong to their school or college or belong to their master's degrees. So if you are new on my channel, please subscribe my channel. So first of all, we will know about the times, what is present, what is past, and what is future. We all know that present means what is going on, and past means what is gone, and future what will come in next. So this is the first tense of our tenses, which is present indefinite tense. In this tense, we see that the things are going on, things are happening. For example, in Urdu sentences, we have its recognition by the words ta hai, ti hai, and te hai. And in English, we see that we use first form of the verb without using any other verb in simple sentences. So let's start it gradually. If we come in Urdu language, हम देखते हैं कि बहुत सारे जुमलों में हम बोलते हैं कि वो स्कूल जाता है, वो आता है, वो खाता है, वो सोते हैं, वो नहीं जागते हैं, अब्बा जान अखबार नहीं पढ़ते हैं, क्या अम्मी जान खाना पकाती हैं. इन सारे सेंटेंसेस में ता है, ती है या ते है आखिर में आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि दीज ऑल सेंटेंसेस बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो अब हमने करना क्या है, हमने सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट एंड देन वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जांपल, अली स्कूल जाता है, इसमें अली क्या होगा, इट इज़ सब्जेक्ट, और जाता है इट इज़ वर्ब. अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट, देन वी विल यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म. अली गोज़, अब ये आ गया गोज़. अब द क्वेश्चन इज दिस दैट हाउ यू विल एबल टू नो कि आपने एंड पे ई एस लगाना है कि एस लगाना है. इसमें हमने करना ये है कि हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है. एस तो हमने सारे ही लगाना है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर ई एस लगता है, वो मैं आपको बताऊँ. जैसे कि अगर वर्ब के वर्ड के एंड पे एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, डबल एस आ जाए, एस आ जाए, सी एच आ जाए, तो हम वहाँ पर ई एस लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अली गोस. अब देखें, गो है, इसके एंड पे क्या आया, ओ आ गया हमारे पास, तो हमने ई एस लगा दिया, अली गोस. हलीमा कपड़े धोती है, तो क्या होगा, हलीमा कपड़े धोती है, तो क्या आएगा, हलीमा वॉशेस द क्लॉथ्स. अब देखिए, वॉश हमारे पास आया एस एच. एज आई हैव टोल्ड यू दैट इफ़ योर वर्ब एंड्स विद एस एच यू विल यूज़ ई एस. तो हेयर वी विल यूज़ वॉशेस. बाकी जितने भी वर्ब्स हैं ऑलमोस्ट यू विल यूज़ ओनली एस इन योर सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंसेस. जैसे मैं कहूँ, अली भागता है. अब अली एज अ सब्जेक्ट वी विल यूज़ अली एंड देन वी विल यूज़ वर्ब रन्स. अब हेयर इज़ रन. रन के आखिर में क्या आया, एन. तो अब हमने यहाँ पर ई एस नहीं लगाना, इस पर हमने ओनली एस लगाएंगे. तो अली क्या होगा, अली रन्स. सो दिस वॉज द फर्स्ट टेंस ऑफ योर टेंसेज. आई हैव टोल्ड यू अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेज. सो नेक्स्ट वी फर्दर स्टेप टू आर नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेज. अगर हमारे पास नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस है तो व्हाट वी विल यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन वी विल यूज़ डू नॉट और डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस योर वर्ब, जो भी वो काम कर रहा है, जो वो उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड पे.
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली स्कूल जाता नहीं, स्कूल जाता है, तो अली डज़ नॉट गो टू स्कूल। Now the question is this, where we will use does and where we will use do. So listen, we will use does with a singular subject and we will use do with the plural subjects. For example, I have told you Ali school नहीं जाता है, तो I used does not. If I say that वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो we will have now वो ज़्यादा लोग वो स्कूल नहीं जाते हैं. They, we will use do not. They do not go to school. Thus the difference between the does and do, if the subject is singular, we will use does, and if the subject is plural, we will use do not. So this was our negative type of sentences. Now next we will proceed to the interrogative type of sentences. In interrogative type of sentences, we will put our do or does before the start of the sentence. For example, क्या अली स्कूल जाता है, we will put does before the sentence, before the subject. We will say, does Ali go to school, and a question mark we will put at the end of your sentence. Does Ali go to school? Do they go to school? The same criteria we will use as we have done in our negative type of sentences. If there is singular subject, we will use does, and if there is plural subject, we will use do at the very first of your sentence. And at the end of your sentence, don't forget to put the question mark, because in your exams, dear student, if you don't put the question mark, your mark will be deducted. So always remember to put a question mark at the end of questioning sentences. So these are very simple present indefinite tense. If you have any query, any question, you can ask me in comment box, and if you like it, please share it and subscribe my channel. Thank you for watching. Allah Hafiz.